There have been good days, bad days, लेकिन आजकल the position is really पाकिस्तान के बुरे हाल हो गए. Mr. Navtej Sarna, thank you very much for coming to ABP Live Podcast. You were an IFS, you were a Celebrator IFS, like ambassador of India to United States. That is like the dream country every Indian thinks of. Do you think that Putin is again want to like assemble the entire USSR? Well, not quite recreate the USSR, but certainly there is a harking back to Russian years of Russian grandeur, Russian global standing, the great Russia, you know. So some of it is territorial. थोड़ा hangover है अभी भी उसके पास कि मैं रशिया हूँ. काफी है. लोग तो उनको कहते हैं कि ये जार बनना चाहते हैं. मतलब ये मैं हमेशा किसी IFS से पूछना चाहता था. मैं कभी मौका मिला नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ पाऊँ. Is it actually that glorious job, that fancy how it looks from outside? या फिर बहुत ज्यादा काम होता है? ऐसी जगह में रहे जहाँ आपको फ्रेश पानी नहीं मिलता था, जैसे पोलैंड में, कम्युनिस्ट पोलैंड में 3 दिन के लिए पानी, बिजली, हीटिंग सब बंद हो गया. इतनी विंटर पड़ी थी, -30. तो हम बाहर से कहीं पाइप टूटी हुई थी, वहाँ जाके बाल्टी भर के पानी लाते थे. और रात में घर में हीटिंग नहीं थी और -30, and my son was about 1 year old, and there was no heating. और चारों गैस बर्नर जला के सो गए. Then you have written extensively, well researched, बहुत सारे अच्छे reviews है about Jallianwala Bagh Massacre. A lot of young people who are watching this episode or are in the millennial age group may not know a lot about Jallianwala Bagh Massacre. Well, hello ladies and gentlemen, boys and girls, I'm Aabir. You're watching Wassup Aabir. It's an ABP Live Podcast. Joining me today in conversation is somebody who has been the face of India for a lot of countries, who has been representing India in the global front. He's a celebrated writer, columnist, Mr. Navtej Sarna. Correct me if I'm pronouncing the name wrong. Absolutely right. Thank you very much for coming to ABP Live Podcast. How are you doing? I'm well. कॉफी आ चुकी है आपके लिए गर्मा गर्म. पहले कॉफी का सेवन करते हैं, उसके साथ साथ इससे बढ़िया बात क्या. Thank you. Thank you, जी. How has been the journey? How has been the life after retirement? Very busy. Very busy. I'm in my 5th year of retirement, and I keep waiting for the time when I will be doing nothing. Hopefully it won't come, because doing nothing is death. True. So it's been great. Fortunately, everything that I have done is what I wanted to do. There have been no have-tos, and I don't have any fixed timing. Are you sure there is no have-to? Of course there will be have-tos. No, there's a have-to, like I have to write. Okay. That's the only have-to. That's a different have-to. Yes, that's the only have-to. Nothing like a skydiving, paragliding, something like that sort. No, those are fun things. Okay. Those are fun things. Okay. What the have-to I don't want is that you please turn up at office at 9:30 and don't go home till your boss goes home. True. And, that sort of a thing. Or you have to go to this meeting. True. I go to things, I do things in which I'm interested. You were an IFS, you were a celebrated IFS, like ambassador of India to United States. That is like the dream country every Indian thinks of. No regrets. But yes, I did retire as ambassador to the United States, but there were several other very interesting postings. True. I was High Commissioner to London, which was wonderful. I was ambassador for 4 years to Israel. Israel, yeah. Extremely interesting. We'll be talking about your book around Jerusalem as well. Yeah, sure. So, and earlier years when I was not the ambassador, growing as an officer in different ranks, I think I did some wonderful countries. You wouldn't even have heard of, or you would have heard of them, but you wouldn't have experienced them because you weren't born. True. When those countries vanished. Countries like the Soviet Union. So my first posting You were in was Moscow, right? Yes, but it was Soviet Moscow. It was much before the breakup and the end of the Soviet Union. Wow. So it's a different world which existed behind the Iron Curtain, communist Poland, Soviet Union, and the way of life that we saw in that world simply doesn't exist now, not even in those countries. True. I was not born
when the USSR just like how do you say it, died basically. Yeah. How was it different from USSR and current Russia? How was USSR different from very current? different. First of all, the physical size. You know, the USSR broke up into 15 countries. Huge. You know, successor states in a way. So one was the sheer size, which contained nations which are today separate countries, say the Uzbeks or the Kazakhs, you know, the Kyrgyz and various other things. Then, of course, the entire political system changed. So there, you know, it was a communist country. It was the heart of communism. It was Soviet communism. And that, you know, entire state-run industry, state-run economy, all that sort of dissolved into pure capitalism. And then, of course, it went through its phase, and today, of course, Putin's Russia is, you know, a different Russia than Yeltsin's Russia was. Yeah. So there have been huge changes. Some things have been lost, some things gained. A lot of people draw parallels with USSR and Putin's Russia. Do you think that Putin is again want to like assemble the entire USSR? Well, not quite recreate the USSR, but certainly there is a harking back to Russian years of Russian grandeur, Russian global standing, the Great Russia. You know, so some of it is territorial. थोड़ा हैंगओवर है अभी भी उसके पास कि मैं रशिया हूँ. काफी है. काफी है. लोग तो उनको कहते हैं कि ये जार बनना चाहते हैं वापस से. So even before the revolution. So it's different, but very much different. But things change. The one thing that life teaches you is that nothing remains the same. True. And ये रशिया को देखने के बाद तो हर कोई बोल सकता है. When you joined as a young officer in the IFS, is it मतलब ये मैं हमेशा किसी IFS से पूछना चाहता था. मैं कभी मौका मिला नहीं कि ये क्वेश्चन पूछ पाऊँ. Is it actually that glorious job, that fancy how it looks from outside? या फिर बहुत ज़्यादा काम होता है? नहीं, दोनों चीज़ है. Because IFS मतलब कि आप डिप्लोमेट बन गए तो उसके पॉजिटिव्स भी बहुत हैं. और जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था 40 साल से पहले, 43 साल हो गए आज मेरे को ज्वाइन किए, उस समय इवन ग्लोबल ट्रैवल वाज अ बिग थिंग. Right. टू स्टे इन अनदर कंट्री वाज अ बिग थिंग. और एज यू ग्रो सीनियर तो आपका जो एक्सपोजर होता है टू द हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ एनी सोसाइटी, you meet the best level of people, you meet the most senior most politicians, you meet kings and queens, you meet presidents, once you become ambassador, prime ministers, you meet the best in the cultural area. Side, right. You have access. If you're interested. Yes. If you're not interested, you will not meet them. True. But you have the access. कि आप अगर, like I was interested in writing, I've met some of the world's greatest writers. You are interested in culture, you can get access to the best culture. You can be friends with the top journalists of a country, with the top industry leaders of a country. So it gives you an access into another society. And during your career, एक नहीं 5, 6, 7, 8 societies का आप अंदर से देखते हैं. और ये नहीं कि आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं. तो आप वहाँ रहते हैं. और इन यंगर डेज आप कोशिश भी करते हैं कि मैं लैंग्वेज भी सीख लूँ. तो यू इंटरनलाइज दैट. आप कौन से बोल सकते हैं? मैं सीखी तो रूसी थी. रूसी सीखी थी? वो तो कंपलसरी थी, मेरी पहली लैंग्वेज. पहली पोस्टिंग थी. उसके बाद मैंने पोलिश सीखी. और 4 साल पोलैंड में रहा तो पोलिश भी बोलता था, पढ़ता था. और उसके बाद कुछ फ्रेंच सीखी, कुछ फारसी सीखी. So, is it very difficult to learn a new language? Depends on your talent for languages. Some people are very good. Yeah. Some people have a lot of difficulty. Some people pick language like this. So, yeah, it's the ear. You know, some people are able to pick it up. Yeah, very quickly. So some people have to struggle with, you know, exercises and homework and so and I think you're better when you're younger. Like बच्चे बड़ी जल्दी से. So Polish is also written in Roman, right? Polish is written in Roman, but they do have certain letters which are different, you know, peculiar in terms of pronunciation. But French and Spanish is Roman. Yes. So Polish is also Roman, but उसमें वो थोड़ा बहुत combination of consonants नुक्ते लग जाते हैं. जैसे crossed L होता है एक.
अच्छा, जैसे आपने फेमस पोलिश लीडर सुना होगा लेक, जिसको आप पढ़ने में सोचेंगे लेक वलेसा। हाँ, लेकिन वो वलेसा नहीं थे, वो लेक वोवेंसा थे। वो क्रॉस टेल है वहाँ पे और ई पे भी एन का साउंड आता है, सो लेक वोवेंसा। सो these are things which you internalize yourself into a society, and that's the great thing. लेकिन उसमें ये ग्लोरी भी है, ये ग्लैमर भी है, ट्रू, लेकिन काम बहुत भी है और निटी ग्रिटी। और ये नहीं कि हर आदमी हर पोस्टिंग वेस्ट यूरोप में बैठा हुआ है या अमेरिका में बैठा हुआ है, वेकेशन मना रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो अफ्रीका भी जाते हैं। ट्रू, हम लोग ऐसी जगह में रहे जहाँ आपको फ्रेश पानी नहीं मिलता था, जैसे पोलैंड में, कम्युनिस्ट पोलैंड में 3 दिन के लिए पानी, बिजली, हीटिंग सब बंद हो गया। इतनी विंटर पड़ी थी, -30। तो हम बाहर से कहीं पाइप टूटी हुई थी, वहाँ जाके बाल्टी भर के पानी लाते थे, और रात में घर में हीटिंग नहीं थी और -30, एंड माई सन वॉज अबाउट 1 year old, एंड देयर वाज नो हीटिंग, और चारों गैस बर्नर जला के सो गए। So so you go and we went through very difficult times. Difficult people, officers go through very difficult postings where कहीं पे medical facilities नहीं हैं, कहीं पे आपको travel नहीं है, कहीं आपको language आपकी family को बिल्कुल नहीं समझाती, तो psychological problems आ जाते हैं, marriages break up, working spouses के issues हैं. So it's not all glamour. True. But you have to be very positive minded for this job कि मेरे को ये करना है। अगर आप सोचते रहेंगे अरे मैं यहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं अभी पेरू में बैठा हुआ हूँ, मेरा जो बैचमेट जो IAS में था नोएडा में, वो उसके पास तो इतना बड़ा बंगला है, वो इतना पावरफुल है, उसके पास 6 गाड़ियाँ हैं, नहीं है। वहाँ आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है, आप उसको खुद ही साफ़ करते हैं, सुबह खुद ही चलाते हैं, कोई आपके ताम झाम वैसी नहीं है। एज ए जूनियर ऑफिसर, अच्छा, आप सेकंड सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, तो यू ग्रो। जब तक आप एम्बेसडर बनते हैं तो यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम, यू गेट, सो it's a very exciting career, very exciting. A lot of people, a lot of young kids who must be watching this interview, this conversation, will be certainly thrilled. Well, I hope so, because we want people to join the diplomatic service who are deeply interested in it, not simply for कि मैं उसमें विदेश घूम पाऊंगा, गाड़ी मिलेगी। वो अब ऑर्डिनरी इंडियन घूम रहा है, अब बोर हो जाओगे, कितने दिन और करोगे? 6 महीने में जिसको देखो वो फॉरेन टूर पे जा रहा है, so all that is gone. So now you need people really who are interested in the job, in that sort of life, who are willing to be adventurous about it, True. So come one, come all. Wow. You were born in Jalandhar, if I'm not wrong? Yes. And you were raised there? No, nothing at all. It's just that my maternal grandfather was posted in Jallianwala. He was the manager of the what used to be called the military dairy farms. Oh. The military used to have its own dairy farms till a They're few still years there. ago. They still have. अभी खत्म हुआ है। अच्छा, okay. हाँ, तो उसमें he was the manager, and they had a big house and all, and my mother, when she was expecting me, was there, and I happened to be born in Jalandhar. I had nothing to do with Jalandhar. But which is a city you feel the most close to? Where were you raised, basically? Well, I think I spent most of my childhood and youth between Delhi and Dehradun. Two beautiful cities. A lot of schooling in Dehradun, a lot of schooling, college in Delhi. So these are the two places. But two very extremely different and beautiful cities. Very beautiful. Very culturally rich. And that is the reason you were mainly into writing? या writing हमेशा से था? क्योंकि दिल्ली या देहरादून दोनों जगह राइटर्स आपको काफी दिखेंगे। हाँ, पर हमारी राइटिंग तो हमारी फैमिली में ही थी। My father was a government servant, but also a government officer, retired as a senior audit and accounts officer. लेकिन वो राइटर थे, वो पंजाबी के राइटर थे। Okay. और बहुत किताबें लिखी उन्होंने, बहुत कहानियाँ लिखी, पार्टीशन के बारे में बहुत लिखा, साहित्य अकेडमी अवार्ड, many awards, and his books were taught in universities. My mother, fortunately, she's still with us. She's a poetess, short story writer. She has a Sahityā Academy Award for translation, of translating English classics into Punjabi. So writing was legacy in my blood. Yeah.
Do you enjoy it I to the love utmost it. level? I love it. I torture myself about it, but I love it. And how is the writing scheme on a regular basis? Like you shell out some time, you sit and No, I try, but I don't have any fixed routines. Okay. So when I have to write, say if I have to write my article, I have to write a column, then I know that I've got these 6 hours, इसी में करना है जो करना है. True. So then I produce the piece. On fiction and all, it's more organic. Some days it keeps bubbling away somewhere in your head. Somewhere you sit down, write 2 hours. Somewhere you write half an hour. True. So slowly it sort of builds up. True. You have written a book called Crimson Springs that is around Jallianwala Bagh Massacre. You will be speaking about it at JLF Soneva Fushi as well, and you have spoken about it at JLF. I've seen your session at JLF, and Soneva Fushi is at Maldives, which is coming soon. Teamworks Art ने बोला कि ऐसा एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हो सकता है. I'm like, why not? I was actually trying to reach out to you काफ़ी टाइम से कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ हो सकते हैं जो कि मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता. बिकॉज यू हैव बीन IFS, यू हैव बीन अ राइटर, एंड आपके बहुत अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. बिकॉज मैं कभी इंटरव्यूज देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो बड़ा एक अलग सा पर्सपेक्टिव निकल के आता है. तो इसलिए मुझे लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. क्रिम्सन स्प्रिंग्स के बारे में बात करते हैं. यू हैव written extensively, well researched, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज है about Jallianwala Bagh Massacre. What is the research journey? How do you actually do this kind of a research? ये बहुत लंबी जर्नी थी. Okay. क्रिम्सन स्प्रिंग जो बनी किताब फाइनली, इसमें 2 चीज़ थी मेरे दिमाग में. पहले तो था कि एक पंजाब के ऊपर किताब लिखें, जो पंजाब की जो चीज़ें अब रही नहीं हैं, अब जो कल्चर था, जो एटमॉस्फेयर था, जो जोग्राफी थी पंजाब की, अब तो वो जोग्राफी ही नहीं रही, कटफट गई है. तो उसके बारे में कुछ लिखे, जहाँ पे सोल्जर्स थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाते थे, रेवोल्यूशनरीज थे. तो वो मेरे दिमाग में घूम रहा था आइडिया. दूसरा आइडिया था कि आई वांटेड टू राइट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर व्हेन द 100 years was coming up. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल दिस, एंड कहीं पे ऐसा लगा कि तो एक्चुअली एक ही किताब है, 2 किताब नहीं. तो फिर जलियांवाला बाग को सेंटर बना के और मैंने ऐसे डिफरेंट प्रोटैगनिस्ट्स बनाए जो वॉइसेस हैं उस किताब में, जो अलग अलग हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रोजेक्ट करते हैं. जैसे एक सोल्जर है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहाँ गया, उसके एक्सपीरियंस यूरोप में क्या हुआ 1914 में, 1915 में, और वो डेजर्ट मेसोपोटामिया में कहाँ लड़े, तो वापस आए तो क्या एक्सपेक्ट करते थे, तो उसकी एक कहानी बन गई. तो वो जलियांवाला बाग में आ गए. ऐसे ही उधम सिंह जो रेवोल्यूशनरी थे, उसने उसकी कहानी रिसर्च करी कि कहाँ गया था, किस डेट पे कहाँ था, तो वो एक प्रोटैगनिस्ट बन गए. और ऐसे ही मिला के 9 प्रोटैगनिस्ट इंक्लूडिंग 2 ब्रिटिशर्स. Oh. So there is the ADC to Brigadier General Dyer who was standing behind him at the time of massacre. तो उसका कैरेक्टर बनाया मैंने कि वो क्या देखता है, वो क्या सोचता है, और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, उसकी बैक स्टोरी क्या है, और आगे उसको क्या होता है जब वो डायर के फ्यूनरल में जाता है, उसके दिमाग में क्या क्या घूम रहा होता. तो ये सब ऐसी 8-10 9 प्रोटैगनिस्ट को इकट्ठा करके each one of them brought forth a different part of the world. They're extremely different, right? Because they're very different. कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई सोल्जर है, कोई कुछ है. हाँ, कोई एक जैसे एक है जो सिर्फ वो अपने बेटे को मिलना आता है, बेटा उसका वॉर से आ रहा है, so he is the father. तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो गवर्नमेंट, वो उसकी सोशो कल्चरल बैकग्राउंड कैसी रही, और उसकी शादी कैसे हुई. तो इसमें ये सब जो पंजाब का एटमॉस्फेयर था, जो चेंजिंग आइडेंटिटीज़ थी, हिंदू, सिख्स, कहाँ तक वो कॉमन था, कहाँ अलग हो रहा था, ये सब चीज़ें मिला के वो किताब बनी. इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट आई एम वेरी हैप्पी विद. बट रिसर्च में बहुत मज़ा आया होगा. बहुत मज़ा आया, और लिखने में बहुत मज़ा आया, और उसको एडिट करने में खुद बहुत मज़ा आया, और फाइनल शेप इज़ वेरी आई थिंक it's come out well. Very cool. Would you mind sharing some insights, like in form of stories, जो कभी किसी से आपने बात किया हो उस रिसर्च के दौरान या जलियांवाला बाग के अराउंड? Because a lot of young people who are watching this episode or are in the millennial age group,
may not know a lot about Jallianwala Bagh Massacre because हम अभी जो 2000 के बाद के बच्चे होंगे वो शायद बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे. हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन वो एक बहुत डार्क फेज है इंडिया की हिस्ट्री का, जो शायद हर किसी ने पढ़ा है या कभी ना कभी सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं सुना है. ये आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर राइटिंग अ बुक लाइक दैट. आई वांटेड टू कैप्चर से फॉर माय चिल्ड्रन कि दिस वाज व्हाट लाइफ यूज्ड टू बी लाइक. ट्रू. दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड. तो अभी आप पंजाब में जाते हैं तो आप, जैसे कल ही मैं पंजाब से ड्राइव करके आया तो सडनली एक कनाल आ गई. आजकल कोई उसका नाम भी नहीं पड़ेगा, यू नो, बिकॉज यू आर गोइंग सो फास्ट, योर कार्स आर सो फास्ट. तो देखा नहीं, लेकिन अगर उसको देखो तो उसको कहा जाता है अपर बारी दोआब कैनाल. अब ये अपर बारी दोआब कैनाल मेरी किताब में भी आती है, क्योंकि ये कैनाल्स कैसी बनी थी पंजाब में, इनका कैसे इम्पैक्ट हुआ था सोसाइटी पे. क्योंकि उधर जैसे आप रावी के आगे जाते हैं यूनाइटेड पंजाब में, तो उस टाइम वहाँ पे कुछ नहीं था. वेस्टलैंड, फॉरेस्ट, श्रब, स्नेक्स, तो कुछ नहीं था. तो अंग्रेज़ों ने फिर जब वहाँ कैनाल्स बनाई, होल कैनाल सिस्टम, फिर लोगों को बोला कि आप जाइए, वहाँ लैंड आपको फ्री दे रहे हैं, आप जाओ वहाँ पे. जैसे बार कहते हैं, संदल बार, दैट एरिया इज कॉल्ड संदल बार, कि आप जाओ संदल बार में, जहाँ हीर रांझा की कहानी इज बेस्ड इन संदल बार. तो आप जाइए वहाँ पे और लैंड को टिल करिए, फार्मिंग करिए, पानी हम देंगे. So that's how it's all started. So one of the characters in the book, Mehtab Singh, actually goes as a child with his father across there, and they cut up. So I made the whole thing of the canals through that child. कि वो देखता है कैसे, how he grows up there, कि यहाँ पे कैसे, how it turned green. अब Punjab is called granary of India. Yeah. How? Because of these canals. Of course, they made the canals with their own reasons. Britishers की इकोनॉमी बढ़ेगी, कॉटन जलेगा, कॉटन हमारा वहाँ ले जाएंगे, ये वो, whatever it is. But so, for instance, this kind of thing we don't know. True. तो मैंने पुराने कैनाल गैजेटियर्स होते हैं, वो उनको पढ़ा. कैनाल गैजेटियर भी? यस यस यस. हर कैनाल का आपको पुराना 1890 से 1920 तक गैजेटियर्स मिल जाए. सर हम 2023 में बैठे, इंडिया का गजेट आजकल लोग नहीं पढ़ते हैं, वो कहाँ मिलता है वो पता नहीं है. उसको आप एक गैजेट पढ़िए, इट मेक्स यू फील समथिंग. इतनी डिटेल में लिखा होता है, विद स्केचेस, विद ड्राइंग्स, कि कहाँ पे ब्रिज बना, कहाँ पे क्या हुआ, कितना कितना लैंड दिया, व्हाट वर द एनिमल्स देयर लाइक, व्हाट वर द डेंजर्स देयर लाइक. So things like that. So ऐसे ही, you know, there are so many aspects to it कि, and some of it comes home very quickly. जैसे एक उसमें protagonist है मेरी किताब में, he is called गंभीर, गुरनाम सिंह गंभीर. He is a young lawyer. अब उसको मैंने बेस किया है, एक लॉयर थे जलियांवाला बाग में. वो 3 दिन पहले, उसका नाम था गुरदयाल सिंह सलेरिया. सो सलेरिया साहब ने, वो जो जलियांवाला बाग से 3 दिन पहले राइट्स हुए थे, राइट्स नहीं, राइट्स इज अ रॉन्ग वर्ड, क्लैश हुआ था, बिकॉज द ब्रिटिशर्स डिपोर्टेड द 2 बिग लीडर्स ऑफ द टाइम, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिनका आजकल नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, और डॉक्टर सत्यपाल. ये दोनों गांधीयन लीडर्स थे. वो गांधी का सत्याग्रह उस समय शुरू हुआ था. तो दे वर कॉलिंग फॉर स्ट्राइक्स. सो माइकल ओडवायर, हु वाज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, डिपोर्टेड देम. व्हेन ही डिपोर्टेड देम, द पीपल ऑफ अमृतसर एंड लाहौर गॉट वेरी एजिटेटेड दैट दे आर आवर लीडर्स, वेयर हैव यू टेकन देम, वी वांट, एंड दे वर गोइंग टू प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स. When they were, Britishers opened fire on them, and they lost about 20 people, innocent people were killed. And to prevent this clash, Gurdayal Singh Saleria was riding across the bridge on a white horse, trying to keep the soldiers away. He was a very brave young lawyer. वो खुद मरने वाला था नहीं तो lawyers ने try किया. Lawyers were very active in Amritsar and Lahore at that time. तो उनको रोकने की कोशिश की, और उसके बाद
वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो लॉयर्स की कितनी बुरी हालत की गई, हाउ दे वर अरेस्टेड, दे वर मेड टू स्टैंड इन द सन, दे वर imprisoned etc, which all happened to Celeria, which I read in his testimony later to the inquiry committee. तो उसके बेसिस पे मैंने ये कैरेक्टर बनाया गुरनाम सिंह गंभीर, और उसको एक एक्स्ट्रा लाइफ दी और डायमेंशन दी, फैमिली दी, which I completely... Few of the things are fictionalized. This is totally fictional. I mean, I took the seed and then fictionalized. So interesting बात ये हुई कि ये जब बन गए तो ये किताब छप गई. I suddenly get a call that, you know, the granddaughters of Mr. Celeria want to meet you. Wow. So I actually found there were two wonderful ladies in their 70s. In 70s? Yes, they're granddaughters. Wow, very true. So they invited us home, gave us a wonderful dinner, and we talked about the real Mr. Celeria because of my fictional character. Wow. So ऐसे, you know, there are all sorts of things. लोगों को मालूम नहीं, उस दिन मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठा हुआ था. I was having a cup of coffee. I got a message through the waiter that lady wants to talk to you. So I invited her to come. And she was the daughter-in-law of Dr. Satyapal. She said, you've written about my father-in-law, so I want to talk to you. So, you know, when you do some piece of work, you don't know where its impact is going to go. It's a small world. It's a small world. It's a small world at one level. Wow. Then moving from Jallianwala Bagh to Jerusalem, how has been that journey? Did you research the majority part of it during your work at Israel? Yes. I actually researched it. I think I probably finished the first draft while I was there. That was a very nice experience, getting to know that, you know, there's an old Indian hospice in Jerusalem. Hospice matlab not hospital type of hospice, but hospice used to be the dharamsala kind of equivalent. Okay. Pilgrims of different countries would go, because Jerusalem is a very holy city to Muslims, to Jews, to Christians. So India से बाबा फरीद के टाइम से, बाबा फरीद पंजाब से थे, तो 12वीं सदी में he was a Sufi. He was from the Chishti clan. Okay, Chishti. He was one of the earliest Chishti followers, leaders. So he went there on the way to Hajj. Okay. तो वहाँ पे जेरूसलम जाते थे क्योंकि जेरूसलम में अल-अक्सा मॉस्क है. अल-अक्सा मॉस्क फॉर मुस्लिम्स इज द थर्ड होलिएस्ट श्राइन. तो वहाँ पे वो जाके मेडिटेट किए, तो फिर उस जगह पे हर साल उनके फॉलोअर्स जाते थे. तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जिसको चिल्ला कहते हैं, और खानका एक सूफी गैदरिंग, नॉट इट्स अ सूफी धर्मशाला, लेट अस से, जहाँ लोग जाते हैं, कुछ पैसा छोड़ आते हैं, वहाँ रहने की जगह मिल जाती है, सोने की जगह, और पीर का कुछ कनेक्शन होता है उस टाइम. तो वहाँ that is how it started. Okay. And it lasted for 800 years. It's still alive, the place. It went through its ups and downs. And it's run today by a family, which is by the director, Sheikh Muneer, is half Indian, half Palestinian. Okay. His father went from here in 1920. वो बहुत लंबी कहानी, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा अभी, लेकिन बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, जो अब भारत सरकार की मदद से उसको रिपेयर भी किया गया है. और अभी भी वहाँ जाके, अब पिलग्रिम्स तो नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे कोई राइटर जाना चाहता है और जेरूसलम में रहना चाहता है, तो उसको $20-25 में वहाँ बढ़िया सा कमरा मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा. So, you know, it's a nice, now very lovely place. And when I wrote this book, we were in the process of getting it rehabilitated. I wanted to capture this story. As an Indian ambassador in Israel? Yes. Okay. Yes. I wanted to capture this story of the family, of Sheikh Muneer, of the survival of the hospice. वहाँ Second World War में हमारे soldiers जाके R&R करते थे. वहाँ पे तो बड़ा ही उसकी history है. Wow. तो that's how that book 800 साल पुराना, 800 साल पुराना, क्या लेगेसी है. कितनी स्टोरीज है, कितनी कहानियां हैं, कितना कुछ है. ये कहानियां बहुत है, ढूंढने की बात है. और उसमें से कितनी लिखी जा सकती है. आदमी के पास वक्त कम होता है, और हर चीज़ लिमिटेड होती है. नहीं तो
इफ यू हैड इटर्नल लाइफ एंड इटर्नल टाइम तो आप कहानियां लिखते हो। बहुत कहानियों का कोई अंत नहीं है। इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में क्या सोच है आपकी? मतलब इतना जो एकदम बवाल चल रहा है, ये इसका कोई सोल्यूशन है? कभी कुछ आएगा सोल्यूशन? अभी मुश्किल होता जा रहा है ये सोल्यूशन, क्योंकि एक समय था कि जब होप थी, डायलॉग था, लेकिन अब वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज आ गई हैं इजरायली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा, और पैलेस्टीनियंस के पास अब लीडरशिप नहीं रही, उनके साथ भी एक्सट्रीमिस्ट चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स which have their own agendas and own interests. So फिर both sides become more and more rigid. So unfortunately वो जो window, there was a window for a two-state solution, which has been the United Nations view, which has been the government of India's position also. Unfortunately, that window has narrowed a lot. And it's a very complicated world now in the Middle East. There's a lot of changes. So it's a very sad situation because it's a very wonderful place, and I wish them well and I wish them peace. They are intelligent like anything. It's a very exciting place. I had a great 4-year tenure there. And it's Jerusalem is the crossroads. It's the crossroads of 3 religions, 3 languages. इतनी history है वहाँ के हर पत्थर में history है. So और उसी के नाम पे पूरा फाइट चल रहा है, और एक इंच के लिए वहाँ झगड़ा होता है. So you know, अब आप the heart of the place is one of the most holiest places for Christians is the Holy Sepulchre Church, which is built on the place where Jesus Christ was crucified on the rock. Now there, within that church, I think there are 6 or 7 different Christian denominations who fight within the church. कि ये दरवाज़ा हमारा है, ये सीढ़ी हमारी है, ये, so you know, in fact all the rights are divided so much that you can't change a thing. If you ever go to the church or see the photograph, there's a photograph in my book also, you will see a wooden staircase outside the church, kept on the window. That is for somebody else. No, you cannot remove that wooden staircase because there is a status quo from 4 centuries on the church, which was put by the Ottomans. कि आप लोग इतना झगड़ा करते हैं, यहाँ status quo कोई कुछ नहीं बदलेगा. So there is that staircase. वो बारिश बर्फ पड़ती है, वो खराब हो जाता है, फिर नया लगा देते हैं वहाँ पे. लेकिन वो बाहर पड़ा हुआ है. बिकॉज उसको कोई हिलाएगा तो वहाँ पे मारपीट हो जाएगी. अब एक सीढ़ी है वहाँ पे जिसकी सीढ़ी का राइट एक डिनोमिनेशन को है, सीढ़ी की सफाई करने का राइट किसी और को. सो यू नो देयर आर, द वर्ल्ड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस. वी शुड थिंक दैट ओनली वी आर कॉम्प्लिकेटेड. द वर्ल्ड इज कॉम्प्लिकेटेड. इसके बाद लगता है इंडिया पाकिस्तान का जो झमेला है वो देन टू थोड़ा सॉर्टेड है. हम अलग लेवल से लड़े जा रहे हैं. I will not come to that conclusion. I leave it as your conclusion. What do you think about this? इसका कोई solution है कभी? Why? देखिए इसमें अब इस chaos के बीच में कभी तो शांति लानी पड़ेगी. There have been good days, bad days, लेकिन आजकल the position is really पाकिस्तान के बुरे हाल हो गए. आप देख ही रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. उसमें there is internal strife, there is military civil strife, there is political rivalries, there is economic problems. In this is not a country at the moment which can get into a serious negotiation or a serious. Besides, there is terrorism coming from there. True. So until that basic position is resolved, that at least they should come out and resolve and project that they are not going to sponsor terrorism. Then we can begin something. Agreed. But at the moment, this is not the problem. And that has been the prima facie perception from their end कि हमेशा terrorism है ही है. अब वो अभी recently भी उनके आए थे, फिर आपस में कुछ लड़ते हैं, खुद ही चले जाते हैं. Not a good atmosphere. But if I ask you, not from an Indian eye, not from an Indian ambassador eye, अगर आप किसी थर्ड कंट्री के एम्बेसडर होते हो, आप पाकिस्तान को किस तरीके से देखते हो? Pakistan is a basket case at the moment. किसी कंट्री भी, सब कंट्रीज
can see what is happening there. True. There is no they have not allowed political institutions to develop. They have not allowed democracy to take root. The military has been a major problem, has been the power player there, and that causes its own problems. Plus, their economic situation has really gone from bad to worse. And today they are really falling into bigger and bigger debt with China. China is building huge projects, you know, this China-Pakistan Economic Corridor, the Gwadar port, the highways, the railways, as part of their, Belt and Road Initiative. So, isme Pakistan ki economy is actually just being submerged in Chinese debt. And now they're desperately trying to get loans from IMF, to sell them. So I think from anybody's point of view, it's bad shape. Not a country that is in a good place. So cool. I would love to know about your life post retirement. कितना writing चल रहा है और कितना writing आने वाला है? नहीं, अभी पोस्ट रिटायरमेंट तो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एक तो क्रिम्सन स्प्रिंग को ख़त्म किया, उसको 2 साल लग गए टू फाइनल 3-4 ड्राफ्ट्स प्रोड्यूस करने में. सो दैट वाज वन मेजर थिंग. दूसरी चीज़, आई राइट कॉलम्स. So I write a monthly column for the last 4 years for the week. Wow. And then I write at least maybe one, sometimes 2 more articles on special request from publications. जैसे अभी कुछ वो coronation हो रहा था किंग चार्ल्स का, तो मंडे को तो द वीक ने कहा कि आप स्पेशल रिपोर्ट एक लिख दीजिए, तो उसमें लग गया मेरा 3-4 दिन. सो ऐसे ही इजराइल में प्रॉब्लम हुए थे, तो I wrote for another paper. So something comes up, I write. Right. I just like to write about 2 articles a month. Are you into poetry and all? No, I don't. I don't do poetry. Never in your life? No. Never attempted? I never attempted poetry, but I think some of my prose, particularly my first novel, which I don't know if it's now 20 years old, so I don't blame you if you haven't seen it. It's called We Weren't Lovers Like That. Okay. That was a Penguin novel. It was a literary love story. Okay. So that had a fair amount of prose poetry. Okay. But not poetry. But do you consume poetries? Sorry? Do you read poetries? Your mother is a poet, that's what you said. I read poetry, English poetry, Urdu poetry. Okay. So yes, I'm interested, but I've never tried to seriously write. Okay. कभी वेब सीरीज फिल्म लिखने का ऐसा कुछ सोचा? आप करवाइए जरूर. मैं अगर किसी दिन डायरेक्टर बना तो जरूर मिलके कुछ बनाएंगे. बिल्कुल. तो हम लोग उसमें तो आजकल there is always OTT आ चुका है बड़ा. there's a lot of things happening. True. So देखिए कभी कुछ जरूर. Actually जो क्रिम्सन स्प्रिंग लिखी हुई है, वो कई लोगों ने मेरे को कहा है कि ये तो फिल्म बन सकती है, पिक्चराइजेशन के लिए. I said हाँ, लेकिन बनाएगा कौन? ये सिर्फ आइडिया मेरे को नहीं, किसी और को भी आना चाहिए. ट्रू. बट कितना इंटरेस्टिंग है कि 9 लोगों का पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है और एक फिल्म है. एक ही इंसिडेंट है लेकिन 9 लोगों का पर्सपेक्टिव. वाओ. ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी. May you write some amazing stuff. Thank you for sharing your wisdom and knowledge with us on ABP Live Podcasts. And I should thank you, and I should thank JLF Suneva Fushi for putting us together. And I look forward to that. Zarur. Future में और भी conversations होंगे. Thank you very much. Thank you.